Hello my dear student. In previous class we have solved some numerical on the basic of equation of motion and start position time graph. In this class we briefly explain or briefly study about position time graph. So first let's see that how can the position diagram is formed for a stationary object. What is the meaning of stationary object? Stationary object means body ta nijor jaga hi rahaba. Stationary, that means the body cannot change its position with respect to time, passage of time. Time jete bhi pass koru jodi ame nijor jaga re hi rahma, that means rest condition re jodi ame rahma, to sete bela ame our position te kwa jiba, amku kwa jiba stationary object. So suppose if we plot a graph between time along x-axis and displacement or position along y-axis. Let's see the initial position of the body is x meter from the origin, and if time will be passes, the body does not change its position with respect to passage of time. So this body is said to be stationary object. So clearly bujhla? So if we plot a graph between time and distance for a stationary object, then in any time the body situated at x meter distance. That means suppose let 2 seconds the body situated at x meter distance, let 4 seconds the body again situated at x distance, let 6 seconds the body again situated at x meter distance. Because time jete bhi pass koru body nijor jaga re hi sabu bele rahaba. Body x meter distance re ache from the origin, the body situated at a distance x meter. So with passage of time the body cannot change its position, it always situated at that distance x meter. So if we plot a graph, then the graph is a straight line which is parallel to the time axis. This is x axis, which is also called as time axis because along x axis we take time. So it is also called as time axis. So the graph is parallel to the time axis. So लिखी दमा में जे as the object does not change its position with respect to passage of time, so it produces a straight line graph, which is parallel to the time axis. तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस जेन ऑब्जेक्ट निजर जगह रे निजे रहबा. तो टाइम जते भी पास करू जदी से ऑब्जेक्ट x मीटर डिस्टेंस रे अछि ले x मीटर डिस्टेंस नहीं रहबा. 2 सेकंड भी x मीटर डिस्टेंस रे रहबा, 4 सेकंड भी x मीटर डिस्टेंस रे रहबा, 6 सेकंड भी x मीटर डिस्टेंस रे रहबा. तो जदी हम गोटे ग्राफ बनेमा दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, बट दैट स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. क्लियरली बुझलो सेरा लगा लीजिए एज द ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to passage of time. तो जदी टाइम रो passage रे जदी तमर ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन x मीटर बोले x मीटर रे ही रहबा बोले if we produce a graph then it is straight line graph which is parallel to the time axis and it is only happen due to stationary object. That means the body cannot change its position. So this graph is formed. Then we देखो position time graph for uniform motion.
motion of an object. Uniform motion of an object. So for uniform motion, here also we plotting the graph, position time graph. Along x-axis we take time and along y-axis we take position or displacement. So uniform motion, what is the meaning of uniform motion? Uniform motion means in equal interval of time যদি বডিটা ইকুয়াল ডিস্টেন্স কভার করবা means যে কোনোসি পয়েন্ট at every point in equal interval of time the body changes equal distance, then at every point the speed of the body is constant or same, so that speed is said to be uniform speed. Already we पढ़े बाबू माने देखो पढ़े थी तुमके सपोज धरो in a body 2 second distance cover कला धरो 1 second स्टार्ट करू 1 second रे इटा सब दरकार इनिशियल पोजीशन 1 second से डिस्टेंस कवर कला 2 मीटर 2 second रे डिस्टेंस कवर कला 4 मीटर 3 second रे डिस्टेंस कवर कला 6 मीटर 4 second रे डिस्टेंस कवर कला 8 मीटर. So if we calculate the distance at every point, if we calculate the speed at every point, then the magnitude of speed at every point same, then it is said to be uniform speed or uniform motion. Already जेंटा पढ़े छे uniform means सब जगह रे तमर speed रा वैल्यू समान रहबा. अब एटा केते बेला पॉसिबल हेबा केते बेला इक्वल डिस्टेंस ता कवर हेबा विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू केते हेबा डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 upon 1 2 4 upon 2 2 6 upon 3 2 8 upon 4 2. So जदि सब जगह रे स्पीड समान रहबा तो सेते बेला त कम यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी भी समान रहबा बेले ताके कम यूनिफॉर्म वेलोसिटी हला क्लियरली बुझला. सो ये हम क्लियरली बुझला जे यूनिफॉर्म हेबा रीजन का इक्वल डिस्टेंस कवर करू छे. जदि इक्वल डिस्टेंस कवर करना थांता ले स्पीड रो वैल्यू अलग अलग पाई. So clearly बुझला. So for uniform motion the body cover equal distance in equal interval of time. So if we plot a graph between this position and time, then 1 second 2 second 3 second 4 second the body cover in 1 second the body cover 2 meter distance, but in 0 second the body is at origin. So 1 second suppose here 2 4 6 8. So 1 second the body cover 2 meter distance, 2 second the body cover 4 meter distance, 3 second the body cover 6 meter distance, 4 second the body cover 8 meter distance. So it is produce a straight line which I have already stitched when I study uniform motion, uniform speed, uniform velocity. So at the body cover for uniform motion, the body cover equal distance in equal distances in equal interval of time, equal interval of time. Then the graph is produced. The equal distance equal time रे cover करू छले graph केनता रहउची straight line. So graph, then the graph is produce straight line inclined with time axis, जो ग्राफ का प्रोड्यूस हवा स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हवा उसे टाइम एक्सिस संगे इंक्लाइंड रहबा, पैरेलली नहीं रहे, इंक्लाइंड. जल्दी बुझला.
क्लियरली बुझलो आउ इने जदि हम स्लोप टा ड्रॉन करना ले द स्लोप प्रोड्यूस वेलोसिटी you know that we have already studied that displacement time graph slope produce velocity और स्लोप के देवा tan theta देवा tan theta is equal to in this case if the y is represented along this side then this is base and this is perpendicular so tan theta is equal to y upon perpendicular upon base that means y upon x that means dy upon dx that means tan theta equal to y2 minus y1 minus t2 by t2 minus t1 changing displacement changing time clearly bujhna which is nothing but velocity that means tan theta is equal to y2 minus y1 t2 minus t1 which is velocity देखो এটা আমি প্রুভ করবা কাজে ইনোর স্লোপ বনাবা আর স্লোপ কেতে বেলা আসবা অ্যাঙ্গল আসলে সো অ্যাঙ্গল গুটা আমি নিজে টাড়মা সো মো বুক হিসাবে করে দউছে যে এই অরিজিন রু নাই ধরি করি 2 meter distance রয়েছে তার মানে ইনিশিয়ালি দ্য বডি অলরেডি সিচুয়েটেড এট 2 meter distance not 0 তো সেই হিসাবে যদি আমি করমা দেখো কানাবা suppose this is a graph along x-axis along y-axis your time is your displacement is taken suppose at 0 second initial second the body cover a distance x0 and in equal interval of time the body cover equal distance so if we plot a graph then the graph is straight line suppose the graph name is AB graph is AB and here we want to calculate slope or drawn slope because slope in velocity represents करूची तो slope means ना tan theta तो tan theta केते बेले पाबो जेते बेले थीटा ड्रा करबो suppose मु लेट नेली लेट e axis में थीटा कैलकुलेट करबो suppose e axis में थीटा कैलकुलेट करबो so from the origin suppose this body cover a distance x1 at this moment and at this moment time will be suppose t1 now in t1 time the body cover x1 distance at this moment when we have to calculate slope then slope पाइबा पे निजे उडे ई डिस्टेंस कैलकुलेट करबो ट्रायंगल फॉर्म देबा तो सपोज in final position B the body cover x2 distance from the origin rule तमर देखो भल कर बुझ जे इनिशियली तमर बॉडी 0 डिस्टेंस रे ही नहीं रही पड़ी सपोज द बॉडी x0 डिस्टेंस रे रहला so initially the body is situated at x0 distance and if we pass equal interval of time the body cover equal distance so finally it will be cover distance x2 and where we want to calculate the slope suppose at that time the body cover distance x1 and this x2 distance covered in t2 time then this x1 x2 is equal to bc is equal to bc and this t1 t2 distance is equal to suppose this name is dc so how can we calculate tan theta how can we calculate tan theta triangle BCD tan theta slope calculate করছো তুমি tan theta is equal to BC upon CD
CD तो BC केता हवा निजे देखो जे origin रू देखो रफली बने दोचे जे origin रू इ लास्ट फाइनल जन B कब कला ले देखो लास्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम the body equal distance cover कला so if you plot a graph then this graph is straight line so final point or final distance is covered with t2 time and x2 distance so देखो जदि आम ऑरिजिन रू जदि तुम डिस्टेंस x2 धर्मा आ गए ऑरिजिन रू x1 तो हमके दरकार ई डिस्टेंस तुम केना जानमा जे ऑरिजिन रू x2 डिस्टेंस रू ऑरिजिन रू x1 डिस्टेंस के काटी देमा ले डिस्टेंस पड़े आसे ऑरिजिन रू तुम x2 डिस्टेंस लंबा बाड़ी रू ऑरिजिन रू x2 डिस्टेंस रू इफ यू सबट्रैक्टेड ऑरिजिन टू फ्रॉम origin to x1 distance then this x1 x2 distance is formed. So instead of x1 x2 or BC we can be written x2 minus x1 and instead of CD देखो origin रू total time t2 अब इटा origin रू total time t1 काम के दरकार भीतर टाइम फिर के दर पारिबा t2 t1 करबो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज इनिशियल टाइम 5 सेकंड दिस इज फाइनल टाइम 10 सेकंड 0 to 5 सेकंड 0 to 10 सेकंड so between t1 and t2 or 5 and 10 how many time increases 5 because 5 रो तमे आको 5 गले ही 10 हबा तो भीतर टाइम केते इंक्रीज हिचे 5 because 5 पछे और 5 आको गले ही 10 हला तो के हिसाब से बाहर 10 minus 5 करो तो ये भीतर टाइम बाहरी गला किंतु सेंटा t2 t1 करो सिमिलरली t2 t1 करो तो ये भीतर टाइम बाहरी जीवा और ये भीतर टाइम ही ये डिस्टेंस और समान t1 t2 तो सीरीज आ रहा लगभग कितनी t2 t1 सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंजिंग टाइम इज इक्वल टू velocity और जिनिस मने रखिथिबो if theta will be increase if theta will increase then velocity also और खाली कहि दिली मुई फार्मूला जे थीटा जदि तुम 90 डिग्री रू कम हेबा वेलोसिटी पॉजिटिव हेबा और थीटा जदि तुम 90 डिग्री रू अधिक हेबा वेलोसिटी नेगेटिव हेबा देखो आउ थरे एबा हम ये सॉल्व करमा पोजीशन टाइम ग्राफ की यूज करी करी देखो खाली कहि दिली मैं तुमके सपोज दिस इज टाइम x axis which represent time and y axis along which we take distance and suppose this is a curve which I have already studied in previous class. So in this case, if we draw a theta, that means if we draw a theta, or in this case theta is less than 90 degree. So here with respect to time, the distance increase. देखो ये टाइम रे डिस्टेंस एते रहउची ये टाइम रे डिस्टेंस एते रहउची ये टाइम रे डिस्टेंस एते रहउची तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम द डिस्टेंस इज इंक्रीज तो कंपल्सरी इन दिस केस वेलोसिटी इज पॉजिटिव फॉर इन दिस केस डिस्टेंस इज डिक्रीज दैट मींस वी मूव a to b to c lastly d because फाइनल टाइम तमे आके बढ़ी जाउछ तो टाइम आके बढ़ी जाउछ तो ई टाइम रे तम डिस्टेंस एते हला ई टाइम रे डिस्टेंस लास्ट को बैक हला फिर टाइम रो रेस्पेक्ट है तुम्हें डिस्टेंस नेबो सो ई टाइम रो रेस्पेक्ट नहीं तो तुम भाभी दबो जे आके भी तो कहि पारबो किंतु कहि नहीं होई बिकॉज़ ई टाइम रो रेस्पेक्ट ने बॉडी इनर रहला ई टाइम रो रेस्पेक्ट ने बॉडी इनर रहला लास्ट के फाइनल टाइम रो रेस्पेक्ट ने बॉडी इनर रहला दैट मींस इन दिस डायरेक्शन द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड सो जेतु इन डिस्टेंस का डिक्रीज होछि तो वेलोसिटी कंपल्सरी नेगेटिव हेबा किंतु हमें एंगल के रिप्रेजेंट करके देखो इन दिस केस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री सो वेलोसिटी इज
velocity is negative. So angle जदि 90 डिग्री टू अधिक रहबा velocity is negative. अब एंगल जदि 90 डिग्री टू कम रहबा velocity is positive. अब मन रखियो 90 डिग्री टू कम रहबा मींस ई टाइप रो लाइन ही 90 डिग्री टू कम रहबा तो ई टाइप रो लाइन थिबा बेले वेलोसिटी के कमे लबा नेगेटिव। अब 90 डिग्री रो अधिक रहबा बेले ई टाइप रो लाइन ही जेना कि टाइम रो रेस्पेक्ट में ता डिस्टेंस टाइम रो रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कमी जाउची ई टाइप में जदि रहबा बेले टाइम रो रेस्पेक्ट से टाइम रो रेस्पेक्ट से डिस्टेंस कमी गला आउ टाइम रो रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कमी गला आउ टाइम रो रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कमी गला तो कंपलसरी वेलोसिटी नेगेटिव रहबा बिकॉज़ डिस्टेंस कमी जाउची। अब ई टाइप में रहले बेले एंगल 90 डिग्री रो अधिक रहबा। सो ई टाइप रो जदि लाइन रहबा that is represent angle more than 90 degree so velocity is negative. Velocity is negative and sorry in this case velocity is positive because जदि हमें ई लाइन में हो ना टाइम रो रेस्पेक्ट में डिस्टेंस टा बढ़ी जाउची सो टाइम रो रेस्पेक्ट में डिस्टेंस टा बढ़ी जाउची तो वेलोसिटी पॉजिटिव और एंगल हिसाब से तमन मोर देन 90 डिग्री की लेस देन 90 डिग्री सो 90 डिग्री रो लेस रहबा बेले वेलोसिटी पॉजिटिव हेबा सॉरी 90 डिग्री रो अधिक अछि 90 डिग्री रो लेस रहबा बेले वेलोसिटी पॉजिटिव ठीक अछि। आ तमे एटा मन रखिथिबो जे ई टाइप रो लाइन रहबा मींस सेटा 90 डिग्री रो कम तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव और ई टाइप रो लाइन रहबा तो से 90 डिग्री रो अधिक एंगल का तो वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव मन रखिथिबो आ तमे प्रैक्टिकली भी देखबो जदि ई टाइप रो लाइन मन करी जदि तमे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रो ग्राफ बनेबो देखबो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस इंक्रीज होउछे तो वेलोसिटी पॉजिटिव हबा। अब ई टाइप रो लाइन मन कर जदि तमे टाइम रो रेस्पेक्ट में डिस्टेंस के देखबो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस डिक्रीज होउछे सो तमे प्रैक्टिकली भी जानि पारुछो जे वेलोसिटी डिस्टेंस इंक्रीज होउछे बोले पॉजिटिव और डिस्टेंस डिक्रीज होउछे बोले नेगेटिव। अब डिस्टेंस इंक्रीज होउछे केन टाइप रो लाइन ई टाइप रो लाइन में इंक्रीज होगा डिस्टेंस with respect to time the distance always increases this type of line so velocity is taken as positive and this type of line form when angle is less than 90 degree and if we plot this type of line along time axis then with increase of time the distance will decrease and it is formed when angle is more than 90 degree तो ठीक अच्छे ये बुझा बाबू मैंने देन हमें वे कितना कर्व बने देखो फर्स्ट क्वेश्चन सपोज योर S and your T ST and this is a graph 10 and 5 then हमके करेक्ट ग्राफ का बाहर करबो करेक्ट VT ग्राफ बाहर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो तुम नहीं पढ़बा किंतु तुम यूज करके बाहर करबो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ काना रहबा करेक्ट ग्राफ ऑप्शन दिथिबा तुमके ऑप्शन देखो फर्स्ट T वेलोसिटी 2 मीटर second option T velocity in this case also 2 meter third equation third option T velocity but in this case velocity is given in downward direction -2 the last equation time and velocity
In this case velocity is minus. So which of the following is right? In मान भितर which of the one is right? केन कंडीशन ता राइट हवा जे हमके क्वेश्चन में दीचे डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और हमके कि vt ग्राफ भितर केनटा राइट तमे बाछो चूज करबो. सो फर्स्ट हमें वेलोसिटी केता बा बाहर कर दमा. वेलोसिटी केता बा वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखो तुम ये दुईटा रेस्पेक्ट तुम बाहर करू छ. सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इटा इनिशियल पॉइंट आसबा इटा फाइनल पॉइंट आसबा. तो दिस इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट. अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट सब बोले y एक्सिस रे कैलकुलेट करा जिबा. तो देखो फाइनल पॉइंट यानी दिस इज s1 डिस्प्लेसमेंट दिस इज s2 डिस्प्लेसमेंट. तो फाइनल पॉइंट देखो डिस्प्लेसमेंट का y एक्सिस रे 0 हेबा s2 जगह रे 0 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड में तुम केते अछि 10 डिवाइडेड बाय t2 minus t1. तो इनिशियल टाइम 0 एंड फाइनल टाइम 5 सेकंड. x एक्सिस पे तुम 5 सेकंड टाइम दीछे. सो फाइनल टाइम 5 minus 0 दैट इज योर minus 10 upon 5 दिस मींस minus 2 मीटर. और पिला ग्राफ को देखि देले ही जानू छे जे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम the distance is going to be decreased. In this time distance is key, in this time distance is key, in this time distance is key, and finally the final time the distance will be 0. That means the body return its original position. तार माने इनो नंबर डिस्टेंस का डिक्रीज होचे तो वेलोसिटी नेगेटिव हेबा. आ गुडे कंडीशन भी जानबो. हियर द थीटा इज मोर देन 90 डिग्री. तो तुम फार्मूला कहिथिली जदि थीटा मोर देन 90 डिग्री हवा पहले वेलोसिटी नेगेटिव. तो कैलकुलेशन में भी वेलोसिटी नेगेटिव होचे. तो तुम कैलकुलेशन नहीं करबी तुम डायरेक्ट जेहेतु थीटा मोर देन 90 डिग्री होचे तो तुम डायरेक्ट वेलोसिटी नेगेटिव करबो. एबे वेलोसिटी केते रहउचे कैलकुलेट कलो -2 मीटर पर सेकेंड. सबरे 2 2 2 अछि. दुटा ऑप्शन कटि जिवो बिकॉज़ इट +2 अछि वेलोसिटी. तो ई दुटा ऑप्शन रो जे भी राइट हवा. तो एबे देखो इन तुम जेकोसी पॉइंट में वेलोसिटी कैलकुलेट करबो जेहेतु एंगलटा समान रहउछि तो थीटा जदि कांस्टेंट तो वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट. तार माने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम द नेगेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो दिस इक्वेशन इज राइट. दिस इक्वेशन इज with respect to time the velocity is increases up to 0 0.5 1.5 finally 2. Kintu in this equation with respect to time the velocity is always with any time the velocity is always -2 -2 -2. तो velocity constant e equation रे होचे. तो this graph is correct. हला next नेक्स्ट देखमा जे तो की टाइप होगा x एक्सिस y एक्सिस ई टाइप रो ग्राफ दिथिबा. सो ई टाइप रे जदी ग्राफ दिथिबा तो कान देखो. सो इन दिस केस वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव. देखो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम the distance is going to be increases. So if distance is going to be increases then velocity is always positive. And if we draw an angle then we draw a tangent and this tangent is less than 90 degree because बार कहली जदि ई टाइप रो लाइन रहबा that angle is always less than 90 degree and we know that if the angle is less than 90 degree then velocity is positive. So ई रू भी जानि पारुछो जे एंगल जेहेतु लेस देन 90 जदि तुम ई पॉइंट रे जदि वेलोसिटी कैलकुलेट करो ई पॉइंट रो एंगल बाहर करो तो एंगल ता बढ़ी जाउछि. इन एंगल 90 डिग्री रु कम किंतु ई एंगल ता बढ़ी जाउछि. तार माने डिस्टेंस बढ़ी गले वेलोसिटी भी बढ़ी जाउछि. सो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव. अब जेहेतु वेलोसिटी बढ़ी जाउछि तो हम ताके एक्सेलरेशन कहमा. सो वेलोसिटी चेंज हबा एक्सेलरेशन
तो वेलोसिटी जदी बड़ी जाउची वेलोसिटी बड़ी का जाउची डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम रो रेस्पेक्ट नहीं टाइम जदी पास करबा वाले डिस्प्लेसमेंट का भी बड़ी जाउची सेटा जदी ग्राफ का ऊपर के जाइछि सो डिस्प्लेसमेंट बोलुचे मींस वेलोसिटी पॉजिटिव और इनो जणा पडुचे जे थीटा इफ वी ड्रॉ ए थीटा दिस इज ए ग्राफ एंड इफ वी ड्रॉ ए एंगल इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट देन दिस एंगल रिप्रेजेंट आल्सो less than 90 degree so velocity is positive practically भी जाना पड़े और velocity जब चेंज होती पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होती तो एक्सीलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव क्लियरली बुझला तो देखो स्पीड मन रखबो जे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जब सेम साइन में रहबे तो स्पीड भी हवा पॉजिटिव में स्पीड इंक्रीज हवा स्पीड तो पॉजिटिव नेगेटिव कहि नहीं पारो बिकॉज़ स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी so in this case speed is also increases so example graph देखिबा velocity acceleration और speed changes के अनुसार होची जदी देखो कोइ थोड़ा लगबो नेक्स्ट सो माने रखला जे जदी तमर ग्राफ ता ऊपर के जीवा बले acceleration भी पॉजिटिव होची देखो बिकॉज़ velocity पॉजिटिव अब तार ऑपोजिट ग्राफ उठे नियो तार ऑपोजिट ग्राफ x axis y axis so if we the graph एबे ई टाइप रे नै रही पड़ी जो तार ऑपोजिट नामा ई टाइप ना नामा जब ई टाइप ना नामा बले काम होगा देखो ई टाइप में जदी हमें नामा बले काम होगा देखो in this case also if we draw a tangent then this tangent is always lesser than 90 degree because तुम बार-बार कहछे जे ई टाइप रो जदी रहबा बोले एंगल सब बोले लेसर देन 90 डिग्री रहबा और एंगल का जदी सब बोले लेसर देन 90 डिग्री रहबा लेसर देन 90 डिग्री रहबा द वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव किंतु देखो इनो के भल बोली फोकस करो ई पॉइंट में जदी तुम एंगल लेबो पछाड़े ई बनेबो ई पॉइंट में जदी एंगल लेबो बोले छोट एंगल बनेबो ए जदी ई पॉइंट में जदी एंगल लेबो आउ टिके बड़ एंगल बनेबो आउ देखो बोले बड़ एंगल बनेबो नहीं चलबो दैट मींस इन एंगल छोट दैट मींस वेलोसिटी स्मॉल इन एंगल बड़ वेलोसिटी बड़ तो वेलोसिटी पॉजिटिव होचे किंतु तार देन डायरेक्शन ता देखुचो तार डायरेक्शन हिसाब से एक्सीलरेशन पछाड़ के जाउचे तो एक्सीलरेशन पछाड़ के जाउचे तो एक्सीलरेशन का हम का धरम एक्सीलरेशन इज नेगेटिव मन रखिथिबो एक्सीलरेशन इज बा नेगेटिव क्लियरली बुझलो बिकॉज़ एंगल कमी जाउची एंगल डिक्रीज होचे सो एक्सीलरेशन बा नेगेटिव वेलोसिटी भी कमी जाउची वेलोसिटी एंगल जे तो कमी जाउची वेलोसिटी भी कमी जाउची किंतु वेलोसिटी एंगल जेन कम होची सेटा 90 डिग्री रु कम रहउची से हिसाब रे काजे वेलोसिटी का हम कहउचो पॉजिटिव किंतु वेलोसिटी कमी जाउची और वेलोसिटी कम बाटे हम काना कहसु नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी जदी पड़बाटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन but in this case angle is periodically decreases so velocity is also decreases and the decrease of velocity is called as negative acceleration so acceleration is negative clearly bujhla so h angle decrease so velocity is also decrease so its acceleration is negative mane rakhibo सरला एबे नेक्स्ट आ गुटे दुटा फार्मूला मने रखिथिबो जे स्पीड रो काटे कहि दउचे देखो आ बुझेबा टाइम लेना तमे सिंपली मने रखिथिबो स्पीड रोटा यदि वेलोसिटी पॉजिटिव हबा आ एक्सेलरेशन पॉजिटिव हबा ले स्पीड को हमें कहबा इंक्रीज जदि वेलोसिटी नेगेटिव हबा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हबा ले स्पीड को हमें कहबा इंक्रीज बिकॉज़ स्पीड गोटे स्केलर क्वांटिटी पछाड़े जदि बॉडी रो वेलोसिटी बॉडी जाउचे ओरिजिन रो पछाड़े जदि तमर बॉडी रो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जदि तमर काना होची नेगेटिव आके बॉडी जाउची स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव तो स्पीड इंक्रीज हो
किंतु स्पीड डिक्रीज केते बेला होबा जेते बेले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भितरे ऑपोजिट साइन रहबा ऑपोजिट साइन माइनस इ दुईटा भितर गोटे प्लस हेबा गोटे माइनस हेबा सेते बेले स्पीड इज डिक्रीजेस मन रखिथियो ई फार्मूला में मु जहां भी कहूचे सब तुम ग्राफ प्लॉटिंग करबा टाइम में तुम यूज हेबा जे कोनोसी ग्राफ तुम निजे करी पारबो आ गोटे दुईटा फार्मूला देखो जदि तुम से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी तो तुम जाइन छ बाबू माने चेंज हेबा और वेलोसिटी जदि चेंज हेबा बेले एक्सेलरेशन भी कनेक्ट हेबा तार संगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी आसी और से वेलोसिटी चेंज होचे मींस एक्सेलरेशन भी तार सहित लिंक होचे सो इटा होचे कॉन्केव अपवर्ड सो फार्मूला माने रखिथिबा फॉर कॉन्केव अपवर्ड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव then this is only we study about displacement time graph then in case of displacement time graph if a concave downward this is concave downward so concave downward acceleration is negative mane rakhithiba eta hola सब formula then अब गोटे क्वेश्चन देखो सिंपल क्वेश्चन रे जदि तुमके ई टाइप रे दिथिबा दिस इज y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दिस इज टाइम एक्सिस एकी दिथिबा आ तुमके कहिथिबा जे नो एक्सेलरेशन काना चेंजेस हेबा वेलोसिटी रो चेंजेस काना हेबा और स्पीड रो चेंजेस काना हेबा जदि तुमके पचरे थी भाई ग्राफ भी करी तो तुम देखो आगो जे दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड यू नो दैट इन केस ऑफ कॉन्केव डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव सो इन दिस केस वी can be written acceleration is positive because this is concave downward. So concave downward acceleration is positive. Clearly बुझलो? So this is concave, it is upward. So ये देखी दबो, then लेखी थी नहीं हुई. This is time, this is x. This is concave upward. The concave part का upward होची. So concave upward. अरे acceleration पॉजिटिव हवा करेक्शन भी कर दबो आउ ई टाइप रो कॉन्केव तल के रहउचे तो इटा हम कहबी कॉन्केव डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इटा के मन रखबो इटा नोट बनेबो सारे काटी दबो जे इट इज कॉन्केव पार्ट तो इने कॉन्केव पार्ट ऊपर के रहउचे एक्सेलरेशन पॉजिटिव इट इज कॉन्केव पार्ट तल के रहउचे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव. So in this case concave upward होचे because हलवा अंश ता हम upward होचे concave upward होचे so acceleration is positive एबे जस्ट कहली concave upward वाला acceleration positive एबे velocity देखो जदी मुई कि टाइम एक्सिस में जदी मुई पूरे एंगल क्रिएट कला में वेलोसिटी आराम से जानी पारमा तो सब दर मुई ना एंगल क्रिएट करी this angle is produced and if this angle देखो इने तमे गुटे का करो टैंजेंट ड्रा करो सो टाइम एक्सिस में ये एंगल प्रोड्यूस होला तो तमे जाइन छ बाबू माने ई टाइप रो एंगल थिले ई टाइप रो लाइन थिले वेलोसिटी हवा पॉजिटिव किंतु ई टाइप रो लाइन थिले वेलोसिटी हवा नेगेटिव बिकॉज़ ई टाइप रो लाइन थिले बेले दैट एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव ई टाइप रो थिले बेले दैट एंगल इज greater than 90 degree so velocity negative so in this case angle j to e type ro line अछि तो angle is greater than 90 degree so velocity is negative clearly बुझलो जदि नै बुझुछ बाबू माने तो सिंपली माने रखिथिबो जे e type रो लाइन थिले velocity positive और e type रो लाइन थिले velocity negative
मन रख तो ये देखो ई टाइप रो लाइन अच्छे तो वेलोसिटी कंपल्सरी नेगेटिव होगा अब एबे जो फार्मूला कहली मुई यदि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी रो साइन समान रहबा बोले ही स्पीड इंक्रीज होगा but in this case acceleration and velocity has opposite sign so in this case speed is decrease next देखमा देखो ये टाइप रो रहबा this is concave downward so in this case acceleration is negative but if we draw a angle then e type ro line asla to e type ro line roile tamar always this angle is less than 90 degree अब इने तम टाइम रो रेस्पेक्ट डिस्टेंस बढुछे so angle जदि e type रो line थिबा बले वेलोसिटी पॉजिटिव होबा तो वेलोसिटी पॉजिटिव मन रखो so in speed होबा decrease because sign अलगा होचे so in this case also speed is decrease क्लियरली बुझलो नेक्स्ट जदि तुम ई टाइप रो जदि थिबा बोले एटा केना होचे कॉन्केव डाउनवर्ड so concave downward so velocity negative but if we draw an angle or tangent then this angle is more than 90 degree मतलब तो बार-बार कहै जदि ई टाइप रो जदि लाइन थिबा ले दैट एंगल इज मोर देन 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री हेबा ई टाइप रो लाइन रे सेटा में वेलोसिटी नेगेटिव हेबा और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जेहेतु नेगेटिव तो इन दिस केस स्पीड इज इंक्रीज जेहेतु समान साइन रहउछे ग्राफ माने देखो ग्राफ माने बहुत इंपोर्टेंट ग्राफ ही परीक्षा रे पढ़बा देखो ई टाइप रो जदि तमर गुडे क्वेश्चन दिथिबा तो ग्राफ पचरे दिथिबा suppose this is time axis sorry this is x axis time this is s axis and y axis displacement ई टाइप रो तमर दिथिबा आ कहिथिबा जे फाइंड चूज करेक्ट VT ग्राफ ई एसटी ग्राफ रो VT ग्राफ बाहर करमा हमके ऑप्शन रे दिथिबा बाबू माने VT ग्राफ रो ई टाइप रो दिथिबा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन ई टाइप रो ऑप्शन दिथिबा VT ग्राफ रो आउ ई टाइप रो ऑप्शन दिथिबा सो मु तीनटा नौचे ना तीनटा रो देखो केनटा ठीक हबा निजे करबो तो आमे फास्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखमा तो फास्ट देखमा जे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रो वेलोसिटी के हिसाब से बाहर होची वेलोसिटी के हिसाब से बाहर होची आगो देखमा तो वेलोसिटी ने दीटा कंडीशन रे बाहरिबा आ मन रखिथिबो ई ने जदी हमें टेंजेंट ड्रॉ करबा मन रखिथिबो जेन पॉइंट ने तुमके वेलोसिटी दरकार you must be draw a tangent at that point so in this case if we draw a tangent then in this middle section the velocity will be 0 because the tangent is parallel to the time axis जे तो parallel रहउची तो s2 distance पे y axis रे जेते हबा s1 distance पे y axis रे सेते हबा मैं तुमके नेक्स्ट लास्ट क्लास रे कहथिली तो s2 s1 कोले डिस्टेंस 0 हो जिवो तो टाइम जेते हेले भी वेलोसिटी 0 हो जिवो तो मन रखिथिबो यदि गोटे tangent यदि टाइम एक्सिस में पैरेलल रहबा then velocity is always 0 because it is parallel to the time axis then हम एटा के तीनटा पार्ट रे डिवाइड करबा then ई पार्ट रे गोटे वेलोसिटी बाहर करबी और ई पार्ट रे गोटे वेलोसिटी बाहर करबी इन पार्ट वेलोसिटी बाहर करबी केता हबा देखो बाबू माने जे in this case velocity is positive because angle is less than 90 degree so in this case velocity is positive but in this case angle is more than 90 degree so in this case velocity is negative and in this case velocity is 0 so graph रे देखो
केन केस में हमर वेलोसिटी बढ़ुचे बढ़ला पर 0 होचे 0 होला पर नेगेटिव के जाउचे देखो इने तो खाली बढ़ी छे पॉजिटिव डायरेक्शन में अछि बढ़ला 0 होला पॉजिटिव पे गला किंतु ने बॉडी करी वेलोसिटी 0 होला पर नेगेटिव के जाइछे इन दिस डायरेक्शन देखो 0 रु बाहरिला 0 रु बाहरला बॉडी गला आ पॉजिटिव डायरेक्शन में अछि छाड़ हमके वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भी दरकार सो इटा ही राइट हबा इटा राइट हला केनता देखो वेलोसिटी आगे बढ़ला पर कमी कमी 0 के आसला पर लास्ट के नेगेटिव आके गला सो दिस इक्वेशन इज दिस ग्राफ इज राइट सो ई टाइप रे तुम ग्राफ देखि बाबा माने तुम निजे सॉल्व करो अब हम केतला क्वेश्चन करमा थाउ एतकी थैंक यू बाय।